कभी आपने नोटिस किया है, लाइफ हमें सबसे ज्यादा कब टेस्ट करती है? जब चीजें गलत होती हैं, जब प्लान फेल होता है, जब ईगो हर्ट होता है, जब कंट्रोल स्लिप हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, स्पॉट बिल्कुल वही करता है। इसलिए हम लेकर आए हैं एक स्पेशल मिनी सीरीज, स्पॉट एज इनर हीलिंग। ये सीरीज स्पोर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये मेडल्स, ट्रॉफीज या परफॉर्मेंस के बारे में भी कतई नहीं है। ये सीरीज एक सिंपल प्रोमाइस पर बेस्ड है। स्पोर्ट लाइफ को कंप्रेस कर देता है। जो लाइफ सालों में सिखाती है, स्पोर्ट वही कुछ कुछ घंटों में दिखा देता है। हर एपिसोड में हम एक स्पोर्ट को देखेंगे एक मिरर की तरह, और एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन सी इनर क्वालिटी को ट्रेन करता है। कभी रेगुलेशन, कभी आइडेंटिटी, कभी अवेयरनेस, तो कभी इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर कॉन्शियसली खेला जाए तो हर स्पोर्ट बन सकता है एक इनर जिम्नेजियम। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीतना नहीं, अंदर से मैच्योर होना चाहते हैं। वेलकम टू स्पॉट एज इनर ट्रेनिंग। आज का पहला एपिसोड है गोल्फ एज इनर ट्रेनिंग। गोल्फ एक अजीब गेम है। यहां आप चिल्ला नहीं सकते, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, कोई रेफरी आपको कंट्रोल नहीं करता। बस आप होते हैं और आपका रिएक्शन। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक कोर पिलर, रेगुलेशन। बैट शॉट के बाद आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, ईगो कैसे रिएक्ट करता है, और आप कैसे रिकवर करते हैं। क्योंकि सच ये है, लाइफ मिस्टेक से नहीं गिरती, लाइफ इमोशनल ओवर रिएक्शन से गिरती है। और गोल्फ इस ओवर रिएक्शन को क्वाइटली एक्सपोज कर देता है। वेलकम टू टिप्सी टॉक्स। जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल विपिन गुप्ता, रिटायर्ड। आपको याद होगा पिछले साल हमने उनके साथ एक पावरफुल एपिसोड किया था ऑन स्पिरिचुअल कोशेंट, SQ, जहां उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रू लीडरशिप सिर्फ IQ या EQ से नहीं, बल्कि इनर अलाइनमेंट से आती है। उन्होंने 3 बुक्स भी लिखी हैं, द गेम्स, माइंड प्ले, ऑपरेशनल एरियाज में इरैशनल बिहेवियर पर, ह्यूमन टू ह्यूमन जो कि रिलेशनशिप्स और ऑथेंटिक कनेक्शन पर है, एंड द पावर टू इन्फ्लुएंस द न्यू एज जो कि स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंस पर लिखी गई है। उनका काम हमेशा एक चीज पर केंद्रित रहा है, इनर क्लैरिटी प्रीसीड्स आउटर इन्फ्लुएंस। आज हम उन्हीं इनसाइट्स को एक नए लेंस से देखेंगे, गोल्फ की गेम के थ्रू। सर, वेलकम बैक टू टिप्सी मंडेज। Oh, thank you so much, Tipsy, for inviting me to your show. It was absolute pleasure for me to be here. सर, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। जब आप एक क्लीन शॉट के एक्सपेक्टेशन के साथ स्विंग लेते हैं और बॉल रफ में चली जाती है, उस सेकंड में अंदर क्या हो रहा होता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जो कि यू हिट द नेल ऑन द हेड, कि जो गोल्फ के अंदर शॉट खराब होती है, दैट इज इनएविटेबिलिटी। इट हैपन्स। इवन द बेस्ट प्लेयर्स इन गोल्फ, चाहे किस लेवल के भी हों, चाहे हमारे जैसे मीडियोकर प्लेयर हों या अच्छे प्लेयर हों, हर एक के साथ होता है। आई हैव प्लेड सम प्रो एम टूर्नामेंट्स जिसमें कि अच्छे अच्छे प्लेयर भी जो है वो गलत शॉट खेल जाते हैं। राइट। और जब आप गलत शॉट खेलते हो, आप अंदर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी ड्राइवर शॉट जो है वो करीब 300 यार्ड जाएगी, 250 यार्ड जाएगी, लेकिन पता लगता है कि वो तो बिल्कुल ही रोल करके कुछ ही यार्ड पे पहुंच गई है। तो उस समय देयर आर नंबर ऑफ इमोशंस दे इरप्ट, राइट? एंड द फर्स्ट इमोशन व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन इज एंगर, गुस्सा। गुस्सा आता है आपको। किस पे सबसे पहला गुस्सा किस पे निकलता है? कि गोल्फ क्लब पे। गोल्फ क्लब पे कैसे गुस्सा निकाल सकते हो आप भाई? बिकॉज 5 मिनट पहले तो आपने उसी क्लब के साथ एक इतनी बढ़िया शॉट मारी थी, तब आपको गुस्सा नहीं आया, तब तो बहुत खुश थे। अभी आपने उसी क्लब के साथ अगर एक शॉट खराब हुई है तो गलती गोल्फ क्लब की नहीं है, आपकी खुद की है। वी डोंट एक्सेप्ट दैट। देन वी ऑल्सो टेक आवर एंगर ऑन आवर फेलो प्लेयर्स, कि जैसे ही मैं शॉट लेने लगा आप हिले,
या आपने कोई बात कर दी, कैडी ने मूवमेंट कर दी, कुछ ने शाउट कर दिया, तो लगे यू आर palming off responsibility of your own failure to सर, execute a good shot on सर, others. So there is no sense of acceptance. And when you don't accept whatever you have done, आपने जो खुद गलती की है आप उसको accept नहीं करते हो, then that you are opening up a Pandora's box of misery, pain, frustration, and it carries on and on and on and on. राइट, तो बहुत जरूरी है कि अगर शॉट गलत हो गई है, शॉट खराब हो गई है, तो कोई बात नहीं, टेक ए पॉज, थिंक, एक्सेप्ट कि इट इज ये होगा ही, राइट, किसी के साथ भी होगा। क्योंकि एवरेज गोल्फर जो है अगर वो एक पूरा अगर राउंड खत्म करता है तो तकरीबन, आप जानते हैं जैसे आप भी खेलते हैं, कि तकरीबन तकरीबन 90 शॉट लगाता है। अब 90 शॉट में से कुछ अच्छे शॉट होंगे, कुछ मीडियोकर शॉट होंगे और कुछ खराब शॉट होंगे। तो एक्सेप्ट करना ही इस चीज को आप इसमें समझदारी है। दैट इज व्हाट आई फील अबाउट इट। राइट, राइट, बट ये जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। आई रिमेंबर जब मैंने गेम स्टार्ट की थी, क्योंकि आज मुझे खेलते हुए तकरीबन तकरीबन 25 साल हो गए हैं, तो शुरू में तो मैंने भी कई बार क्लब को जमीन पे जोर से गाड़ा या ऊपर फेंक दिया, सर, और आज भी लोग करते हैं। सर, और बड़ी देख के लगता है कि ये तो बिल्कुल गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए। दिस इज व्हाट राइट, हैपेंस। राइट, राइट। सर, गोल्फ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है क्योंकि आप इसमें चिल्ला नहीं सकते सर, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, जैसा आपने कहा अभी कोई रेफरी नहीं होता, बस आप और आपका नर्वस सिस्टम होता है जो एक साथ प्ले कर रहे हो। इट इज ऑफन सेड इन गोल्फ सर दैट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट योर ओन सेल्फ, नॉट अगेंस्ट एनीबडी एल्स। क्या गोल्फ ने आपको सिखाया है कि इमोशनल डिस्चार्ज को कैसे कंटेन किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इमोशनल डिस्चार्ज जो होता है हमारे अंदर गोल्फ की गेम खेलते हुए, आप ये सोच के चलिए कि आप गोल्फ खेलने गए हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं सर्दियों में गोल्फ खेलने के लिए, 4-5 घंटे वहां लगाते हैं घर वालों से दूर, एंड यू एक्सपेक्ट व्हेन यू गेट बैक after a game or round of golf, you will feel so happy, so comfortable, so nice, because you're playing in the nature. क्योंकि golf ऐसी गेम है जो कि ऐसे जैसा कि आपने बताया कि it is played in silence सर, and it is played in nature. लेकिन जो इमोशनल डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि आपकी गेम ठीक चली नहीं आज, आप एक के बाद एक गलत शॉट मार रहे हैं, और वो जो इमोशनल डिस्चार्ज है वो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। राइट तो सर, कैसे उसको दूर करेंगे? सर, भाई दूर तो करना ही है आपने। अगर आपने गोल्फ खेल रहे हो 10 साल से, 5 साल से, कुछ देर से, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि अगर आप इमोशनल डिस्चार्ज को कंट्रोल नहीं करते हो, यू विल नॉट बी एबल टू प्ले द गेम ऑफ गोल्फ द वे यू कांट प्ले द गेम ऑफ लाइफ। लाइफ भी हमारी गेम ही है ना, उसमें भी अगर इमोशनल डिस्चार्ज है तो आप यू विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजंस, यू विल राइट, फॉल्टर एवरी टाइम, राइट? In leadership also it is very very important that you have an emotional stability, ठीक है? तो इसमें यहां पर एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो होती है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, मैं आज फिर थोड़ा दोहराना चाहता हूं कि हमारी जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, विच इज द फाउंडेशन, विच इज द मदर ऑफ ऑल इंटेलिजेंस, और सारी जो बाकी इंटेलिजेंस है, चाहे वो EQ है, चाहे IQ है, चाहे आपकी हैप्पीनेस क्वोशिएंट है, सभी उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, बिकॉज इट लेज द बेसिक फाउंडेशन। तो यहां पर जो हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस सिखाती है कि एक्सेप्टेंस, राइट, एक्सेप्ट, वंस यू एक्सेप्ट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वंस जी, यू एक्सेप्ट देन देयर इज नो पेन, देयर इज नो मिजरी, यू मूव ऑन। दैट इज राइट, वन। राइट, सेकंड, जो मुझे लगता है कि मैंने ये सीखा है गोल्फ से, और बाकी लोग ने ये सीखा होगा, कि आपको स्कोर बोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको अगर एक बैड शॉट हुई है, आफ्टर ऑल इट इज अ बैड शॉट, इट इज अ शॉट, राइट? एंड इट डजंट मीन दैट इसके बाद आपकी अच्छी शॉट नहीं होगी और यू विल नॉट बी एबल टू प्ले बेटर। सो डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम द स्कोर बोर्ड, ठीक है? डोंट बॉदर अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, जस्ट थिंक एज टू, if I detach myself from what I've done, you will be able to recover faster. Take a pause. गोल्फ में एक गोल्डन रूल होता है, जो गोल्फ खेलते हैं, जैसे आप भी खेलते हैं, आपको मालूम है कि 2 शॉट के बीच में एक पॉज होता है। आई कॉल दैट पॉज एज ए गोल्डन मोमेंट। जब राइट, आप वहां से चल के खराब शॉट या अच्छी शॉट लगा के जा रहे होते हैं दूसरी शॉट लगाने के लिए, तो आपके दिमाग में कई चीजें चल रही होती हैं। यू हैव डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन योर माइंड. The mind is very noisy, but you have to
put an end to that noise. You have to Right. stay calm, Right, sir. right? You have two options. One option is that you allow ego to take the better of you, and you say, okay, doesn't matter, I have done this, but since I play very good golf, I will hit hard, I will recover. And more often than not, you will not be able to recover. The second option is, cool, doesn't matter. You look at your breath. I was once playing with a professional, remember in I remember in Bangalore. Sir. I asked him a pertinent question. I said, if one lesson in golf, if you want to give me, what is that lesson? You know what he told me? Sir. Tipsy. He told me, he says that watch your breath. Okay, sir. If your breath is calm, Calm. that means your rhythm is intact, Okay, sir. right? So during that pause, when you're moving after hitting a bad shot to the next shot, pause, think, reset, don't react, but respond, Respond, right? sir. And then stay in that moment. It is one shot at a time, and then play that shot. You will Excellent. find that you'll be able to recover it well. It happens with all of us, so that is how. Excellent. And don't carry your past. For heaven's sake, don't carry your past. Bad shot, that thing is over already. आपने एक बैड शॉट मारी है, उसके बाद वो खत्म हो गया. Why are you carrying that baggage with you? Because the moment you carry that baggage with you, it will affect your next shot. Absolutely. They say that our future depends directly on how we live our present. If our present is bad, if our present is not in sync with nature, then our future is going to be bad. So that is very important that you forget about the past baggage, forget about the shot as early as possible, and move on to the next. Next one. Your emotional recovery will be within a matter of no times. I can tell you this much. Right, right. सर मुझे लगता है गोल्फ ईगो को बहुत साइलेंटली एक्सपोज करता है हर गोल्फर में सर. जैसे क्रिकेट में क्राउड होता है सर, रनिंग में एक रिदम होता है, पर गोल्फ में जैसे हमने अभी बात की साइलेंस होता है, एब्सोल्यूट साइलेंस एंड यू प्लेइंग अगेंस्ट योर ओन सेल्फ. क्या आपने कभी फील किया है कि गोल्फ ने आपको आपका असली ईगो दिखाया है गेम में? बहुत बार हुआ है. एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है और ये सबके साथ होता है. देखो, we humans, we have come with a boon and a curse. Sir. You know what are these two? The boon is our consciousness, our awareness, our ability to perceive well, our ability to see from within and without, right? And the curse is our ego. Right, sir. Ego is the biggest curse. It takes us away from our present moment. And always keep us in rigmarole, in something or the other, keeps creating a lot of webs around us, right? The connection that we have with our consciousness, the connection that we have with our awareness, which is the connection with the universe, that connection gets snapped when the ego takes over. Right. Because ego wants to control. Ego wants to gather fame under all cost, right? Whereas golf requires surrender. So. golf तो बिल्कुल उसका opposite है यार. Ego का बिल्कुल opposite है. You just can't win over the various factors that are operating in a golf course. Can you get rid of the air which is flowing from left to right and say, okay, I'll bloody take the better of it? There are so many things you have to keep in mind. लेकिन आपकी जो ईगो है जब आड़े आने लग जाती है, तो आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं कि आपने एक शॉट मारी जो कि बड़ी अच्छी शॉट है. आपकी शॉट लगी, it traversed a very long distance, it soared, and now when you're taking the second shot, there is a tree or a water obstacle in between. Now the intelligent mind will perceive it, which is without ego, which is in the present moment, which is still कि नहीं यार मुझे इसके साइड से निकलना है या इसको ले ऑफ करके पास जाना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉट खेलूंगा. लेकिन ईगो कहती है नहीं भाई, आप तो खिलाड़ी हो, and you will hit hard. And when you hit hard, 9 out of 10 times, Tipsy, you will either end up going into that bunker or water body or hit the tree. That is what ego does. So ego plays merry hell with the golfer. And ये एक बहुत बड़ा lesson है, बहुत profound lesson है for every golfer, that you have to shed your ego when you're playing the game of golf. Humility, which is the expression of power. That is what you should, always you should be stuck to. Humility. Because that will get you rid of your false pride
and allow you to maintain your dignity. So, You know, कई बार ऐसा हुआ कि ईगो के नशे में हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं और उसका इतना पछतावा होता है गोल्फ कोर्स पे स्पेशली, और लाइफ के अंदर भी ऐसे ही होता है. correct. In life also it happens like that. In leadership it happens like that. You can't be egoist. You can't carry egoist mind and think that you'll be able to maintain harmony. You will be able to have a happy team Team. in So, leadership. No, you can't. You have to have a humility. humility. It is a expression of power, like I said earlier. Right. So that you have to carry. तो ईगो जो है आपको कहीं का नहीं छोड़ती, चाहे वो गोल्फ कोर्स पे हो, चाहे जिंदगी में हो, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, आर यू मे बी स्पिरिचुअल लीडर और कॉर्पोरेट लीडर और मिलिट्री लीडर, ईगो हैज नो room. Right. So it has to be shed at the earliest. Only then you will be under control of your other mind, consciousness. Right. You will be able to do things from stillness, from the present moment. And they say that universe is committed to presence as umbilical cord is committed to fetus. Imagine. Okay. जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो उस समय पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा होता है. यूनिवर्स प्लेज फ्रॉम योर टीम एज योर कंपेनियन. Then universe takes it as the obligation to bring success, and that happens only in the present moment in a Right. still mind. Right. So still mind gets immediate favor of the universe. So that is what you should be exercising to Right. get rid of ego. Right. Yeah. सर, कहते हैं मिलिट्री हो, कॉर्पोरेट हो या फैमिली, जब डिसीजन गलत होता है तो लोग आपकी टेक्निक नहीं देखते, वो आपका कंपोजर देखते हैं. क्या आपको लगता है गोल्फ ने आपकी लीडरशिप रेगुलेशन को शेप किया है? Golf, actually, if you're playing a good golf, if you're playing a good round of golf, you see your golf is improving as you're playing over time. It shows that your leadership qualities are also improving. I have made a statement like this because golf में क्या कुछ नहीं सिखाती है. Like I mentioned to you, golf हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें ईगो के नीचे नहीं आना है. We have to shed our ego. Golf हमें सिखाती है that we have to accept everything in life. We have to flow with nature. Let go, let universe. ठीक है. और हमें ये भी सिखाती है कि हमें किस तरह से हमें प्रेजेंट मोमेंट लेके हाउ वी हैव टू क्रिएट ए हार्मोनियस टीम लीडरशिप के अंदर. क्योंकि अगर आप गोल्फ के अंदर टिप्सी, अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, इफ यू फील जेलस, इफ यू फील एनवियस ऑफ योर पार्टनर, if you don't feel good about he's executed a good shot, from inside you feel jealous and think, what the hell, yaar, whether I will be able to execute the similar shot or not. What is happening? You are basically you are creating bad vibes, negative energy. So whatever you are creating within, the same thing will go out and will come back to you. तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है लीडरशिप के लिए. Yes. ठीक है. इस प्रकार से हमें गोल्फ जो है और बहुत कुछ सिखाती है. कैसे गुस्सा नहीं करना है, हाउ टू मेंटेन योर बैलेंस, हाउ टू मेंटेन योर कूल. बिकॉज if you are in a difficult situation as a leader, which you will come across many times, and if you are not able to maintain your cool, everybody is watching you, everybody is looking at you, you are on that pedestal. People expect that this man will deliver in odds, this man will deliver in difficult situation. उस समय आपकी जो कूलनेस है, अंदर की आपकी जो स्टिलनेस है जो अंदर चल रही है, वो बहुत जरूरी है मेंटेन करना. रिदम मेंटेन करना बॉडी माइंड का. Because if your body and mind, they get in sync with the universal vibes, then leadership shines. Then that is what golf teaches you. So. And you learn these lessons almost every day. Let me tell you that everything that you do on a golf course is a lesson by itself, provided you have a conscious mind, provided you have mind which is observing. Absolutely. So when you observe with clarity, right? We just talked about ego. When you play with ego, you get exhausted, but when you play with stillness, you refine. So same thing goes with leadership. When you play with stillness, with stay in presence, you refine your leadership. And that is what I feel. I mean, I can go on and on and on and on. Leadership
has a direct connection with golf. It Right. teaches you spiritual intelligence. Golf. Spiritual intelligence has direct bearing with leadership. Imagine the 5 elements of spiritual intelligence that I mentioned during our last episode. Awareness, spontaneity. Spontaneity allows you to take intuitive action, immediate action. You don't sit on files. Holism. You carry everybody along with you as a team. You don't argue with people. And humility that I already mentioned, and happiness, which is the hidden truth about every human existence. All Absolutely. this come along, and a person who's playing golf and doing well. I again mention this. I'll again like to reiterate that he will definitely be a good leader. He will create harmony. He will create trust. He will create faith. He will carry a happy team. Right. That's what I feel. Right. सर गोल्फ में एक चीज बहुत पावरफुल होती है प्री शॉट रूटीन एज यू मेंशन अ लिटिल अर्लियर सर पॉज Yeah. ब्रीथ अलाइन एंड देन टेक अ स्विंग अगर ये पॉज ना हो तो अगला शॉट डिस्टर्ब हो जाता है आई मीन मोर ऑफ अ चांस दैट इट विल गो हेवायर्स क्या लाइफ में भी पॉज ही रेगुलेशन का एंट्री पॉइंट है बहुत जरूरी है. मैंने आपको बताया कि एक गलत और एक अच्छी शॉट के बाद पॉज लेना जरूरी है. सर देखो, हम गलत शॉट की बात तो कर चुके हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू शॉट मिसफायर्स, बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. द ऑपोजिट ऑफ इट, it may also happen that you execute a very good shot, right? Now you, even that is also emotional load you're carrying of a good shot. You're building a pressure कि I have hit a good shot, now there is a chance that I can par this hole or I can do a birdie. ठीक है, आप वो लोड को अपने साथ लेके चलते हो. After a good shot, remember, I'm not saying a bad shot, a good shot. And more often than not, because of that, you get overawed by your good shot, you'll find that you're spoiling your that shot also. Hence, pause is very important. In राइट pause, you need to forget as to what has happened. Whether you've executed a good shot or a bad shot, both can cripple your next shot. ठीक है, लाइफ में भी ऐसे ही होता है. You got fantastic result. So up, you're basking in the glory of that, and you forget so many factors, so many things, and you land up again in problems. So golf brings you down to Mother Earth. Same thing happens in life also. So pause is very, very important. राइट Pause में आप अपने आप को reset करते हो. You think as to what has gone wrong. See, what has happened, what happens in golf is that when you execute a good shot or a bad shot, when you're not aware as to what is happening, awareness, consciousness, awareness, you don't even know कि ऐसी क्या चीज हुई है कि मेरा शॉट खराब हो गया, ऐसी क्या चीज हुई है कि मेरा शॉट अच्छा हो गया. You are not even aware. You are actually groping in the dark. How would you relate it, and how would you correct your next shot, or how would you ensure that you don't repeat the same mistake even after a good shot or a bad shot, both ways. तो पॉज एक बहुत बहुत जरूरी चीज है जिंदगी के अंदर. बड़े बड़े प्लेयर्स आप ले लो, टाइगर वुड तो खैर अभी बहुत पुराना हो चुका है. अभी जो McLaury's. अब मैं कई नाम ले सकता हूँ. रोरी Rory मैकलोरी. McLaury. हाँ, रोरी मैकलोरी. Now he's the one who does this drill very often. It's not a weakness that you're taking a pause. You're still. It is a strength, and it prepares you for the next shot. So taking pause in life is also very important. Right. Right. That's what I feel. Right. Sir, they say golf is a very brutal game, sir. You miss a shot, the scoreboard changes after that. The game continues. There is no sympathy. There is no justification. आपने कब सीखा कि I am not my last shot, that I have to move on. I mean, the last shot does not identify me anymore. बहुत जरूरी है कि आप शॉट बाय शॉट खेलो. You live moment by moment. Don't carry what has happened. ठीक है, golf is one shot. I was playing the other day. You know, कल परसों की बात है. I was playing, So, and when you play, despite of the fact that you know so much about it, golf and all that, you're practicing spiritual intelligence and you're doing all kind of things. Still, because we are, after all, we are lesser mortals. Yeah, we are not gods. बिल्कुल. Apprehensions, self-doubt, fear sometimes strikes, right? तो क्या हुआ कि ये परसों चौथ हम जब खेल रहे थे, तो उस समय जब मैंने अच्छी गेम चल रही थी, I was doing very well, and suddenly while taking a shot,
some kind of apprehension came that I'm not able to hit that well. Some apprehension came that gave a self doubt. Okay, I tried to sort of rectify it. The more I tried to rectify, the more Yes. effort I started putting in, Absolutely. the more noisy it became. So anybody's guess, I didn't play that shot well, and I lost that hole. So it is so important that you play shot by shot. Okay? And if you played a good shot, forget that also. If you played a bad shot, forget that also. Play a new shot, address it as a new thing, something which is new. बहुत जरूरी है इस चीज को करना, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो देन यू विल कैरी द लोड, यू विल कैरी द pressure of Right. performance, pressure of what you've done in the past. कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसी before they take off from a hole, you will find many players will say कि yesterday on this hole I hit a birdie. Yes. Brag about Yes. it. I hit a birdie. So do you think they will repeat the birdie today? They will not. Because they're Correct. carrying that bloody emotional Correct. discharge जिसकी आपने बात की है. He's carrying that emotion. That emotion is affecting him. They will not even make a par. They will bloody go 1 over, 2 over, whatever. They will spoil the game. तो Absolutely. शॉट बाय शॉट खेलना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है. Right. और जब आप शॉट खेल रहे हैं उस समय प्रेजेंट मोमेंट में होना बहुत जरूरी है. देयर इज वेरी नाइस बुक कॉल्ड पावर वर्सेस फोर्स, रिटन बाय डॉक्टर डेविड हॉकिंस. Right. पावर वर्सेस फोर. ना उसमें ये बोलता है कि जो सबसे खराब 5 इमोशंस हैं, जिसके अंदर की एंगर भी आता है, जिसके अंदर की जेलसी भी आती है, जिसके अंदर शेम भी आती है, सारी चीजें जो आती हैं, जब आप इनको लेके चलते हो तो उस समय योर एफिशिएंसी लेवल गोज डाउन. ही इवन गोज टू से दैट while doing the experiment, he says when you carry some substance in your pocket, and he carried out that experimentation called kinesiological experimentation, which means the movement, how your muscles move, how the muscles react. He says when you carry a negative substance or a negative emotion with you, you will find that your energy level gets depleted, Drops. your power gets depleted. Right. Imagine if you're carrying that and you're not playing shot by shot. You can play merry hell with every consecutive shot. Hence, it is important that you play one shot at a time and reset yourself. Right. Right. सर कॉर्पोरेट में लोग एक मिस्टेक को आइडेंटिटी बना लेते हैं, खास तौर पर आजकल सर, व्हेन यू हैव टू हैव समबडी टू ब्लेम. फैमिली में लोग एक आर्गुमेंट को कैरेक्टर बना लेते हैं, मोर सो इन दिस द मॉडर्न वर्ल्ड दैट द किड काइंड ऑफ जेन ज़ी दैट वी हैव टुडे. गोल्फ में आपको तुरंत अगला शॉट ही लेना होता है. क्या ये डिटैचमेंट रेगुलेशन का हिस्सा है सर? बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिटैचमेंट. Detachment is very important, Tipsy, in life also, like in golf. Sir. Right? Because if you don't practice detachment, then you will become slave of your emotions. Detachment doesn't mean physical separation. Detachment means mental independence. Right, sir. इस बात को समझना बहुत जरूरी है. हम मैं थोड़ा सा इससे डाइवर्ट करके हम कहीं और जाते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं, आवर किड्स दे लिव मोमेंट टू मोमेंट. मैं स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि जेन जीज भी नहीं, उनसे भी छोटे हैं. माय ग्रैंड चिल्ड्रन, right, they are so attached when they come home, right? And we also get so much attached, but the moment they go out of the house, within no time they will be transported to a different world, totally detached from what has happened in the past. We are still carrying that emotional load. We are still carrying that attachment. Absolutely. They are not even bothered. You ring up, they'll tell you different stories. घर में जो हुआ सब भूल चुके हैं. आप उसी काम में घूम रहे हो, आप उसी अटैचमेंट में चल रहे हो. So detachment is very, very important in golf and in life. And I told you that it is not that you're trying to separate yourself from your relations, your friends and others. No. You are just simply exercising your mental freedom. Right. You still love them. I still love my grandchildren. I practice it. Believe me, last time my grandchildren came here, me and my wife, she gets emotionally very, attached. So we went out and we dropped them at the airport. While coming, I said, we'll go to mall.
We went to Elante Mall. We had our lunch. We spent some quality time, did some shopping, came back. I said, "How are you feeling now?" They are feeling detached. That is the power of detachment. Absolutely. See, it is Absolutely. not something which is negative. It is very very positive trait. Very positive. All Yeah. of us must practice. And गॉड में तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ जैसा कि लाइफ में इंपॉर्टेंट है. So So, that is what I feel. so sir, a lot of spiritual lessons have come out in our discussion today, and especially pertaining to the golfers. And golfers can actually relate to what you're saying. Next time I step out onto the golf course, sir, I'll carry these lessons with me, and let's hope my game improves with all the understanding that I've attained today. सर मान लीजिए कोई गोल्फ नहीं खेलता तो और वो आज का एपिसोड देख रहा है तो उसके लिए इस एपिसोड से क्या टेक अवे है सर? देखो, जो सारी चीजें मैंने बताई हैं जो कि गोल्फ के लिए एप्लीकेबल हैं, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर लाइफ ऑल्सो. कोई चीज आप मुझे बताओ जो हमने डिस्कस की है जो कि लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है. पेशेंस. डोंट यू थिंक वी शुड एक्सरसाइज पेशेंस इन लाइफ? डिटैचमेंट, आई टोल्ड यू, टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, टू मेंटेन योर इनर बैलेंस, टू मेंटेन योर रिदम. When you maintain your balance, your rhythm, you get connected. So it is important in life also. So you play any game, you play cricket, you play anything. Although I also maintain that golf, all this is built into the structure of golf, Yes. which may not be the case. But you don't pause in cricket. There's one ball and another ball, and there's no pause. Whereas in golf, there is a pause between the two shots. It allows you to recover, think, ponder. So you either deteriorate or you improve. Golf is different. But all these lessons are equally applicable. How do you exercise emotional recovery? Life में emotional setbacks होते हैं. But golf teaches you how to recover. ये सारी चीजें applicable हैं लाइफ के अंदर भी. तो I feel that our discussion today that we've taken golf as a medium, Sir. as a base. I think it carries a lot of meaning for people who are non-golfers, who are invested in other sports, or who want to be, want to improve, want to elevate their spiritual intelligence, want to improve their spiritual quotient, Right. and become a director of good things in life and not a chaser. They don't have to chase, they have to attract. Right. They will become attractive. Right. So all these lessons are applicable. And believe you me, the day I forget some of these cardinal lessons that we have discussed, that day my game gets spoiled. Even now, today also. Right. And I come back, every day I come back, Tipsy, feeling that these are such important lessons जो हमने आज discuss किए हैं. And if you apply those lessons in your life, your life can be different. तो चक्कर सिर्फ यही है कि हम सीख लेते हैं. इट इज एन एकेडमिक एक्सरसाइज टू गेन नॉलेज, बट वी डोंट कन्वर्ट दैट इनटू प्रैक्टिस. द नॉलेज बिकम विजडम ओनली इफ यू प्रैक्टिस व्हाटएवर यू हैव लर्नड. सो दैट इज माय kind of advice or whatever. I do that. Right. No point preaching unless you practice. Right. Only then things will improve. Right. सर, आज का एपिसोड गोल्फ के बारे में नहीं था, ये उस इनर नॉइस के बारे में था जो हर बैड शॉट के बाद उठता है. और शायद लाइफ भी बस यही करती है, हमें टेस्ट करती है बार बार कि हम लोग रेगुलेट कर पाते हैं या सिर्फ रिएक्ट करते हैं. Vipan Gupta sir, thank you very much for bringing so much honesty and clarity to this conversation. Thank you for being on the show. Thank you so much, sir. Thank you, Tipsy. Thank you for having me with you. It was a pleasure to be part Thank you of so the much. show. Thank you. Sir. Thank you. Bye. ये था स्पोर्ट एज इनर ट्रेनिंग का पहला एपिसोड, जहां हमने देखा कि गोल्फ सिर्फ गेम नहीं है, वो रिहर्सल है लाइफ के लिए. अगर मैं आज की कॉन्वर्सेशन को बहुत सिंपल शब्दों में समराइज करूं तो 3 बातें सामने आती हैं. नंबर 1, मिस्टेक्स इनएविटेबल है, ओवर रिएक्शन ऑप्शनल है. गोल्फ हो या लाइफ, प्रॉब्लम गलती नहीं होती, प्रॉब्लम होता है इमोशनल स्पिल ओवर. नंबर 2, पॉज इज पावर, स्टिलनेस बिफोर द नेक्स्ट शॉट वही रेगुलेशन का एंट्री पॉइंट है. और नंबर 3, यू आर नॉट योर लास्ट शॉट. अगर आइडेंटिटी हर मिस्टेक से अटैच होती तो ग्रोथ रुक जाएगी. रेगुलेशन का मतलब है इम्परफेक्ट होके भी स्टेबल रहना. बस शायद गोल्फ हमें यही सिखाता है,
रिएक्शन से पहले रेगुलेशन। आज का एपिसोड गोल्फ के बारे में कम था और इनर स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा। लाइफ हर दिन एक बैड शॉट देगी। सवाल यह नहीं है कि वो आएगा या नहीं, सवाल यह है आप उसके बाद कैसे खड़े रहते हो। अगली बार एक और स्पॉट, एक और इनर लेंस। दिस इज टिप्सी मंडेज, पार्ट ऑफ टिप्सी टॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।